आरआरबी नर्सिंग प्रीवियस पेपर, ये जो पेपर रहने वाला है ये आपका 2019 का प्रीवियस पेपर लास्ट फोर्थ पेपर रहने वाला है। वैसे तो काफ़ी सारे नर्सिंग के पेपर हुए थे। 2015 में आपके 3 सेट हुए थे, 2019 में आपके टोटल 6 सेट हुए थे। हमने काफ़ी सारे प्रीवियस पेपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी पेपर जरूर चेक करना है, लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ये पेपर की बात करें, ये जो पेपर रहने वाला है लास्ट फोर्थ के आंसर की रहने वाली है, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में पेपर दिख जाएगा। क्योंकि ये जो सेट रहने वाला है ये आपका फोर्थ स्टेज का सेट रहने वाला है। 2 सेट अभी बाकी हैं और 2015 के आपका 1 सेट, वो भी हम आपको इसी चैनल में एक्सप्लेन कर देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर देना। जब भी हम आपको पेपर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। लिंक बाकी जो भी हमने पेपर ऑलरेडी अपलोड किए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वो भी जाके जरूर प्रैक्टिस कर लेना। The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called an option A fetus, option B gamete, option C zygote and option D egg. Correct option answer number A fetus. Question number 2. Power of a lens of focal length f is given by A P equal to f by u, B P equal to f by f, C P equal to u by f and option D P equal to 1 by f. Correct answer number D P equal to 1 by f. Question number 3. Which phase is maximum multiplication resulting in increased population of bacteria with reduced generation time? Option A stationary phase, option B decline phase, option C lag phase and option number D log phase. Correct answer number D log phase. Question number 4. The area of inquiry in the grounded theory approach is A. Social structural process within social setting, B. Behavior observed over time in natural context, C. Holistic view of culture and option D. Lived in experiences. So the correct answer number A. Social structural process within social setting. Question number 5. The most important hormone secreted by the pineal gland is A. Androgen, B. Parahormone, C. Melatonin and option number D. Thyroxine. So the correct answer number C. Melatonin. Question number 6. What is the choanal atresia? Option A. Congenital obstruction of the middle ear. Option number B. Congenital obstruction of nasopharynx. Option number C. Congenital obstruction of urethra and option number D. Congenital obstruction of oropharynx. So the correct answer number B. Congenital obstruction of nasopharynx. Question number 7. The failure to conceive after 1 year of unprotected regular sexual intercourse is called as option A. Normozoospermia. Option number B. Infertility. Option number C. Azoospermia and option number D. Spontaneous conception. Correct answer number B. Infertility. Question number 8. Nervous tissue is made up of that receive and conduct impulse. Option A. Mucus. Option B. Enzyme. Option C. Neuron and option number D. Nephron. Correct answer number C. Neuron. Question number 9. Which one of the following substance is released during inflammatory process when platelets are activated? Option A. Heparin. Option B. Histamine. Option C. Bradykinin and option number D. Serotonin. Correct answer number D. Serotonin. Next question. Question number 10. Which among the following was created for the administration of big cities? Option A. Municipality. Option B. Zonal Council. Option C. Municipal Corporation and option number D. Panchayat. Correct answer number C. Municipal Corporation. Question number 11. Which part of the breast is Montgomery gland situated?
ऑप्शन ए लैक्टिफेरस साइनस ऑफ मिल्क डक्ट, ऑप्शन नंबर बी एल्वोलाई ऑफ लेब्यूल, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिफेरस डक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी नियर द बेस ऑफ द निपल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नियर द बेस ऑफ निपल। Question number 12. Which muscle injury caused torticollis during delivery? Option A smooth muscle, option B cardiac muscle, option number C sternocleidomastoid muscle, option number D skeletal muscle. Correct answer is answer number C sternocleidomastoid muscle. Next question number 13. Milk ejection hormone is A oxytocin, B vasopressin, C progesterone एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोलैक्टिन। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इज मेनली कास्ड बाय ए स्टेप्टोकोकाई, बी सेलोमोनेला, सी स्टेप्लोकोकस एंड ऑप्शन नंबर डी स्यूडोमोनास। सो द करेक्ट आंसर नंबर सी स्टेप्लाइकोकस। क्वेश्चन नंबर 15 which are the main functions of hypoglossal nerve? ऑप्शन ए है swelling and speech, ऑप्शन बी hearing and smell, ऑप्शन सी vision and sensation एंड ऑप्शन नंबर डी sensation and hearing। आपका सही आंसर है आंसर नंबर ए स्वेलिंग एंड स्पीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका प्रोसेस ऑफ स्ट्रेट डीप फर्म स्ट्रोकिंग टाइप ऑफ बैक मसाज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सर्कुलर मसाज, ऑप्शन बी फ्रिक्शन मसाज, ऑप्शन सी नीडिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है इफ्यूलरेज। करेक्ट आंसर आपका आंसर नंबर डी है एफिलरेज। क्वेश्चन नंबर 17 which cortical area is responsible for the formulation of speech? A hypothalamic area, B hippocampus, C cerebellum area and option D broca area। correct answer number D broca area। question number 18 what is the place within which microorganisms can thrive and reproduce? option A portal of entry, option B reservoir, option C portal of exit and option D pathogenicity। correct answer number B reservoir। क्वेश्चन नंबर आंसर तो बी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है The cord that is inserted into the membranous some distance from the edge of the placenta is known as option A filamentous insertion of cord, option B battledore insertion of cord, option C sequestratia placenta and option D circumvallate placenta। So the correct answer is option A filamentous insertion of cord। Question number 20 The primary granuloma formed in tuberculosis is known as A Redis cells, B Johnson's focus, C goblet cells and option D caseous focus। correct answer number B Johnson's focus। question number 21 The condition in which false beliefs are firmly maintained even though they are not shared by other called A illusion, B delirium, C hallucination, option number D delusion। the correct answer number D delusion। question number 22 which is mainly responsible for fight or flight reaction? A posterior part of hypothalamus, B adrenal cortex, C anterior part of hypothalamus and option D adrenal medulla। correct answer number D adrenal medulla।
Question number 23. What is normal length of neonate body? A. 52 centimeter, B. 49 centimeter, C. 55 centimeter, and D. 50 centimeter. Correct answer number D. 50 centimeter. Question number 24. Which vitamin does convert prothrombin to thrombin? A. Vitamin B2, B. Vitamin A, C. Vitamin K, and option number D. Vitamin D. Correct answer is answer number C. Vitamin K. अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और इसके कम्प्लीटली 3 सेट आए हैं। आपके एक दिन में 2 पेपर हुए हैं, ये दूसरा पेपर है। पहला पेपर हमने अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। उससे पहले जो 3 पेपर का सेट हुआ था, पहला शिफ्ट, वो भी अपलोड कर दिया है और तीसरा शिफ्ट हमारे चैनल में आएगा। तो आप पूरे वीडियोस देखें, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, आपका पेपर निकल जाएगा। हमें ये 10 क्वेश्चन तो इससे आते ही हैं, प्रीवियस ईयर पेपर थे, तो करके ज़रूर जाइएगा। और नई वैकेंसी हमारे चैनल में आती रहती हैं, तो चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 25. What is the precautionary step to be taken before administering an anti-serum antitoxin? A. Blood test, B. CSF test, C. Sensitivity test, and option D. Urine test. Correct answer, answer number C. Sensitivity test. Question number 26. Ukai Dam is located in which state? A. Punjab, B. Manipur, C. Gujarat, and option D. Tripura. Correct answer, answer number C. Gujarat. Question number 27. The number of complete oscillation per unit time is called? A. Wavelength, B. Frequency, C. Time period, and option D. Amplitude. Correct answer, answer number B. Frequency. Question number 28 है आपका. The antigen that forms loose and cotton woolly clump during egg glutination is A. H antigen, B. F antigen, C. O antigen, and D. Antigen. Correct answer, answer number A. H antigen. Question number 29. Suggested the continuing education. A. Kothari Commission, B. Mudaliar Commission, C. Bhore Committee, and option D. Chadha Commission. So the correct answer is answer number A. Kothari Commission. Question number 30. Anything which evokes a response in the organism is called? A. Incidence, B. Stimulus, C. Thing, and option D. Situation. Correct answer number B. Stimulus. Question number 31. The process by which muscular fiber of cervix and pulled upward and merged with fibers of the lower uterine segment is known as? A. Formation of retraction ring, B. Effacement, C. Receptive of laxation, D. Sign of placenta separation. Correct answer, answer number B. Effacement. Question number 32. Which among the following is also called otitis externa? A. Occupational bone osteomyelitis, B. Parietal bone osteomyelitis, C. Frontal bone osteomyelitis, and option number D. Temporal bone osteomyelitis. Correct answer number D. Temporal bone osteomyelitis. Question number 33. Metal produce ringing sound. They said to be A. Ductile, B. Lustrous, C. Malleable, and option D. Sonorous. Correct answer, answer number D. Sonorous. Question number 34. All the executive action of the government of India are formally taken in the name.
A. The Vice President. B. The Chief Justice of India. C. The Prime Minister. And option D. The President. Correct answer number D. President. Question number 35. World Heritage Site Fatehpur Sikri is situated in which of the following state? A. Madhya Pradesh. B. Rajasthan. C. गुजरात एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश. करेक्ट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट ब्रोमीन? ए Bi, बी Br, बी बी सी Br एंड ऑप्शन डी Be. करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी Br. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ pancreaticoductanum? So the correct answer is option A. Bilirubin second. Option B. Pancreatectomy. Option C. Bilirubin first. And option D. Whipple procedure. Correct answer is answer number D. Whipple procedure. Question number 38. Dash are the atom having same mass number but different atomic number? Option A. Isohydrates. Option B. Isotopes. Option C. Isotherms. And option D. Isobar. Correct answer number D. Isobar. Question number 39. Fear of closed places is termed as A. Acrophobia. B. Hematophobia. C. Gamophobia. And option D. Claustrophobia. Correct answer is D. Claustrophobia. Question number 40. What type of abnormal finding is identified in ECG during myocardial ischemia? Option A. W pattern T wave appears. Option B. Ecotopic T wave appear. Option C. Horizontal and small T appear. And option D. Inverted and larger T wave appear. Correct answer number D. Inverted and larger T wave appear. Question number 41. Which one of the following is a method for effective control of pain in post-operative patient, those with chronic pain? A. Transmucal route. B. Transdermal route. C. Parenteral route. And option D. Intraspinal route. Correct answer number B. Transdermal route. Question number 42. The Bohre Committee aimed at having a health center to serve a population of about A. 2 lakh to 3 lakh. B. 5,000 to 10,000. C. 1 lakh to 2 lakh. And option D. 3 lakh to 4 lakh. So the correct answer is answer number C. 1 lakh to 2 lakh. Question number 43. Bhupen Hazarika, who received Bharat Ratna Award in 2019, is famous in which of the following field? A. Music. B. Cricket. C. Mountaineering. D. Athletics. So आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए म्यूजिक. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 44. Who discovered virus in biology? Option A. Dmitry Ivanovsky. Option B. Edward Jenner. Option C. Robert Koch. And option D. Robert Hooke. Correct answer है आंसर नंबर A. Dmitry Ivanovsky. Question number 45. Which condition is defined as the inflammation of peritoneum? A. Colitis. B. Gastritis. C. Periodontitis. And option D. Duodenitis. Correct answer is answer number C. Peritonitis. Question number 46. What is pulse defect? A. Difference between the popliteal and ankle pulse rate. B. Difference between the apical and radius pulse rate. C. Difference between the brachial and ankle pulse rate. And option D. Difference between the apical and ankle pulse rate. Option number B is correct. Difference between apical and radial pulse rate.
क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो फॉर टीचिंग हॉस्पिटल? ए 1:3, बी 1:2, सी 1:5 एंड ऑप्शन डी 1:1। करेक्ट है आंसर आपका 1:5, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, विजयवाड़ा सिटी इज सिचुएटेड इन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी कावेरी। द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द पोजीशन कॉल्ड दैट patient sat at the side of the bed with the head resting on the overhead table on top several pillows? A tripod position, B Fowler's position, C lithotomy position and option D Trendelenburg position। करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए ट्रिपॉइड पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, द अर्थमेटिक एवरेज which is obtained by summing up all the observation and dividing the number of observation is called? A standard deviation, B mode, C mean and option D median। करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी मीन। लास्ट 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, आप जाके चेकआउट कर लेना। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।